नमस्कार। आप सभी लोग सकुशल आनंदपूर्वक घर पे होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आपके इष्ट मित्रजन भी सकुशल होंगे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। और इसके साथ ही हम बात करते हैं, जैसे कि कल हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की, इन विच वी हैव टॉक अबाउट द different kinds of the interactions, especially we have talked about the parasitism, competitions, predations, right? So later on there is a few or one three more type of population interactions are remain, in which we have to talk about the first, that is the mutualism. Means what do you mean this mutualism? Here in the PPT you will get a very less, but I will explain you in details. Okay, so if we talk about this mutualism, you can just think that how this mutualism can show such type of structures in that conditions. If we can say, means mutualism is an interaction that can be confers benefits on the both interacting species. Means in the mutualism both species get beneficial from each other. Means both can be always in positive, right? Evenly we can say, if we can talk about the examples, as you can just see here, that is lichen, that is fungi and algae. Means lichen can be developed with the help of the associations of the fungi and algae. But how it can shows the mutualism? Basically, if we can talk about lichen can represent an intimate mutualistic relationship between the fungus and the photosynthetic algae or the cyanobacteria, right? Here we can say the fungus can always helps in the absorption of the nutrients from the soil, right, from the surroundings, and provide protection also to the algae. But in place of that, algae can capable to do the photosynthesis, means it contains the chlorophyll, due to which it can utilize all those substances, those materials, and prepare the food, and it can provide the food to the fungi. So we can say this is the symbiotic relationship in which both can capable to provide food materials or both can benefit from each other. If we can take out another example, that is called the mycorrhiza. Mean how the mycorrhiza can help as the mutualism. If we can talk about generally mycorrhiza close mutual association between the fungi and roots of the higher plants. आपके जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में, स्पेशली अगर हम बात करेंगे अपने सराउंडिंग्स की, तो यहाँ पे पाइनस है, पाइनस की रूट्स में भी ये मैक्रोजिया मिलता है. सो दिस द एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एज वेल एज द roots of the higher plants, in which the fungi can help the plant in absorption of the nutrients while the plant provide food for the fungus. So this is, we can say, it is a mutual, means in which plant can also benefited by the fungi and fungi can also benefited by the plant. So this is known as the mutualism. We can say there are some animals, plants and animals can also show the mutual relationship. But how? How the generally people can or animals can always consume the plant? No, not only that one. Especially we can say that both plants and animals are both shows the mutual relationship between them. Because if we can talk about how the plant, generally plant need help from animals for the pollination. Especially plants needed a main process, that is called pollination, means transferring of the pollen grains from anther to stigma. It can be done with the help of only, especially with the help of animals, right? And the seed dispersals, evenly animals can also help them. The seed can be dispersed from one place to another place. On the other hand, plant provide nectar, pollens, fruits to the pollinators. Means in place whenever they can do the pollination, and after that these plants can provide them nectar, the fruit juice, the fruits, and the to the animals. And we can say, if we can take an example of wasp, right? That is the female wasp use the fig fruits not only as ovipositions, right? Means अब what is this ovipositions? Egg laying.
मीन्स द ओविपोजिशन मीन एग लेइंग प्रोसेस नोन एज ओविपोजिशन। स्पेशली जो फीमेल वेस्प होती है वो फिग फ्रूट के अंदर एग देती है, ठीक। लेकिन इसके बदले इसके अलावा भी राइट इट कैन यूजेस द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर न्यूरिशिंग इट्स लार्वा। खाली जो फ्रूट है उसमें ये नहीं करती है कि खाली अंडे देकर चले आई, लेकिन स्पेशली जो आपका फ्रूट है फिग फ्रूट है, इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशमेंट टू द लार्वा ऑफ दिस वेस्प। एंड वी कैन से द वेस्प पॉलिनेट द फिग inflorescence, means wasp will acts like a pollinator in that conditions, right, while searching for the suitable egg laying sites। जब ये वेस्प जो इंसेक्ट होता है, जब अपने एग लेइंग के लिए साइट ढूंढ रहा हो तो उसमें ये पॉलिनेशन भी कर देता है, और इसके बदले जब वो फिग फ्रूट्स के अंदर अपने एग दे देता है और तो उसके जो लार्वा निकलते हैं तो वो उसी फिग फ्रूट्स के ऊपर फीडिंग करते हैं। सो वी कैन से दे कैन ऑल्सो डू द सेम म्यूचुअलिज्म। इवनली वी कैन से फिग प्रोवाइड द वेस्प सम सीड्स एज फूड फॉर द डेवलपिंग वेस्प लार्वा, एज आई हैव टोल्ड यू, राइट। ऑन द अदर हैंड वी कैन से अनदर एग्जाम्पल, नॉट ऑल ऑर्चिड्स ऑफर रिवार्ड्स। जितने भी ऑर्चिड डेवलप करते हैं वो सबको रिवार्ड मिला, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वी कैन से स्पेशली the Mediterranean orchid orpheus employs sexual dacites, means to get pollinated by the species of bees. It is an example of a specific plant in which we can say one petal of its flower bears an uncanny resemblance of the female of the bees in size। especially जो petals होते हैं फ्लावर के, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बी के स्ट्रक्चर के वेस्प के इसके जैसा ही रहता है। सो वी कैन से द कलर एंड द मार्किंग, स्पेशली द स्पॉटिंग भी जो आपके फीमेल बीज के उस पर रहती वही रहती है। द मेल बीज इज अट्रैक्ट टू व्हाट परसीव्स एज अ फीमेल, जनरली उस फ्लावर को मेल बी एज अ फीमेल मान लेती है, जिस वजह से ड्यूरिंग दैट इट विल स्टार्ट दैट मेल कैन बी अट्रैक्टेड टू दैट female pursuit and it will show the pseudocouplettes with the flower। During this pseudocouplet the process pollen is dusted from the flower। जब ये pseudocouplet करती है बीज तो जिसकी वजह से वहाँ पे pollen grains क्या होते हैं, they will start to scatter, they will start to get dusting from that anthers, right। So when the same bee pseudocouplettes with the another flower is transfer pollen to its and pollinate the flower। जब सेम कंडीशन में यही भी दूसरे फ्लावर पे जाके pseudocouplet करेगी तो उस कंडीशन में पॉलिनेशन कराने में हेल्प करती है। सो वी कैन से दिस इज द केस ऑफ इंडिकेट दैट द प्रोसेस ऑफ कोओव्यूलेशन, मीन्स दोनों के अंदर कहीं ना कहीं बीज का कोओव्यूलेशन हुआ होगा, दैट्स वाई इट कैन बी शोज सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन दैट कंडीशंस, राइट। Evenly we can say we can take the another type of the interaction, that is the commensalism। According to this interaction what will happen, that it is an interaction between the different species in which one species is harmed and other neither benefited nor harmed। Only one benefit, one species can be always harmed। Can you just think about the example of this one? I think if you can just see in the PPT, there is an example of the special, you can see here, especially that is the penicillium, growth of the penicillium during the bacterial culture, right। So we can say it in this special interactions, when the two species are interacted to each other, one species can be harmed and other be neither harmed nor benefited, means we can say one species is always negative and another will show the zero interactions, zero conditions। So on the basis of that we can understand easily about the
एमेंसिलिज्म. As we can talk about the example of this emencelism, the penicillium. Penicillium, as you everybody know that this penicillium, it is a mold which can be secretes penicillin. Especially this penicillium can be always help for the secreting of the penicillin. Penicillin is a antibiotic which will always works against the bacteria. Right, so we can say while the discovery of this penicillin is occurred, in that particular conditions we can see in it that the bacterial culture, right, in which this penicillium can grow, in that particular conditions we can choose the interactions that is called emencelism, right, in which we can say when the bacterial culture can be developed after few days, fungus growth will be there on it like penicillium. उस बैक्टीरियल कल्चर पे फंगस पेनिसिलियम की ग्रोथ हो गई. इन दैट कंडीशंस इट्स सिक्रीशंस ऑफ केमिकल्स विल किल द बैक्टीरिया. और इस पेनिसिलियम के सिक्रीशन की वजह से बैक्टीरिया क्या हो गया, किल हो गया. राइट, means it can, but the fungi does not get any benefit from there. It means that bacteria can get harm, but fungi does not get any type of harm or any type of profit. So we can say such type of the structure is known as emencelism. Right, in the same way there is one more interaction that is commonly known as commensalism and is most important in point of view of your examinations. Right, if we can talk about the especially commensalism, especially in that conditions, you can say that is commensalism. Right, so this commensalism can also most important, you can say this is the star one. Why it is star? Because this commensalism can show some special type of interactions. Okay, it can be the interaction between two species where one species is benefited and other can be neither harm nor benefited as emencelism. अभी हमने आपको emencelism बताया जिसमें एक को हार्म्ड होता है लेकिन उस दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है, ना ही नुकसान होता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वन स्पीशीज विल बेनिफिटेड, जस्ट अपोजिट ऑफ द emencelism. राइट, so if we can talk about the different examples of this emencelism, that is the orchid. What is that orchid? Everybody know about the orchid, right? Orchids are the different kinds of plants or epiphytes which can be grow on the other plants. Just you can say epiphytes of the mango tree, right? You can see, आपने देखा होगा कभी कभी मैंगो ट्री के ऊपर कुछ दूसरे टाइप के पेड़ पौधे उग जाते हैं. राइट, तो सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज orchid. Right, evenly we can say generally in that particular condition orchid, this orchid can get benefited from over there, right, but it can be show some examples in that conditions. Means this orchid can get shelter support from the mango tree while mango tree neither benefit sorry beta, neither benefited nor harmed. मीन्स ऑर्किड जो प्लांट्स है वो जब मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो करता है तो उसको प्रॉफिट होता है क्योंकि उसको शेल्टर मिल जाता है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन मैंगो ट्री को कोई भी फायदा नहीं होता है. एक और एग्जांपल लेते हैं एग्रेट्स का. मीन्स आई थिंक एवरीबडी हैव सीन दिस एग्रेट्स, दैट इज यू कैन से
right? Aggregates always forest closing to where the cattle are grazing. आपने देखा होगा जो एग्रेट्स एक बर्ड्स होती है, राइट, ये अधिकतर जहाँ पर एनिमल्स चर रहे होते हैं या फूड ले रहे होते हैं सब्स में, हर्ब्स में, तो वही उनके पीछे पीछे फॉलो करती है उनको, राइट. तो हाउ दिस इंटरेक्शन कैन बी बिकम्स एन कॉमेंसलिज्म in that conditions? You must know that aggregates can always forage close to where the cattle are grazing. Generally, why they do so? Because the cattle are moved, stripped up, and bushes and insects the flourished out from the vegetation to be catched by the cattle aggregates. Especially we can say जब एनिमल्स उन झाड़ियों में, उन पेड़ों के बीच से मूव करते हैं तो वहाँ जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं, ठीक, जो छुपे रहते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वहाँ से उड़ते हैं और उनके उड़ने पर ये कैटल एग्रेट्स क्या होते हैं, दे कैन कैपेबल टू ईट देम. तो कहीं ना कहीं द इंटरेक्शन बिटवीन दिस एग्रेट्स एंड द कैटल्स कैन बी सीन दैट ओनली कैटल एग्रेट्स कैन बी benefited, but those cattle does not get any harm or any benefited from over there. So you can take another example from the sea. That is, sea anemone has a sitting tentacles and a clownfish lives among them. आपने देखा होगा जो सी एमनियन होता है वो क्लॉनफिश के साथ अटैचमेंट रखता है. अब इसमें कैसे इंटरेक्शन हो जाए कॉमेंसलिज्म? तो जनरली द फिश गेट प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स. जो आपके फिश है, क्लॉन फिश है, इट विल गेट द प्रोडक्शन अगेंस्ट द प्रीडेटर्स विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स. क्योंकि जो सी एमनियन इसके ऊपर होता है और सी एमनियन के ऊपर बहुत बड़े 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 टेंटिकल्स होते हैं जिसका साइज बड़ा दिखाई देता है और उसके प्रीडेटर्स इजीली इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं. जैसे मैं बता रहा हूँ, वी कैन से द एमनियन डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिटेड फ्रॉम द होस्टिंग द क्लॉन फिश, राइट. अगर क्लॉन फिश के साथ वो अटैचमेंट रखता है तो उसको कोई और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है. लेकिन स्पेशली जो फिश है, जो क्लॉन फिश है, इट विल कैन बी ऑलवेज गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इट्स प्रीडेटर्स. एंड वन मोर एग्जाम्पल विच कैन ऑल्सो बी आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, दैट इज barnacles grown on the back of the whale, right? Means the barnacles. How the barnacles can get the benefited or whale can be benefited? No, we can say barnacles are benefited to move to different locations for food as well as the shelters. Generally, barnacles cannot be move very fastly, so they can get attached to the, right, grow on the back of the whale. So we can say these barnacles can get the different locations for food as well as the shelter, while the whales are neither benefited nor harm. इसका कोई भी प्रॉफिट व्हेल फिशेस को नहीं होता है. So this way we can say it is most important kinds of the interactions which can be especially. Then take a quick revision about all such type of things in which you can just learn this table. According to this table you will understand all those things that easily, right? And some more examples from here also. So as we talk about the interactions, species A, B, and nature of interaction and examples, right? So if we talk about the mutualism, so in both species we get benefited, as I have told you, beneficial to the both obligatory or both species, as the example of the lichens and the mycorrhizae, right? We can talk about the proto cooperations. It is another one. So generally it is not given in the NCERT, but in this condition also the interaction is just like the positive and beneficial to both organisms. And we can say oxpecker or tick birds and the rhinoceros, crocodile birds and the crocodile. Means oxpeckers or tick bird in rhinoceros, especially they can be always tick out all the ticks from their body. आपने देखा होगा बहुत से एनिमल्स जब कहीं चलते घूमते रहते हैं उनकी बॉडी पे बहुत सारे ऐसे बर्ड्स बैठी रहती हैं. इसी तरीके से क्रोकोडाइल बर्ड भी जो होती है वो क्रोकोडाइल की पीठ पे बैठी है, उसके ऊपर जो प्रीडेटर्स होते हैं उसके ऊपर जो टिक्स होते हैं उनको कंज्यूम कर लेते हैं. इसलिए एक को फूड मिलता है और एक क्लीननेस आती है, इसलिए वी कैन से इट इज द मोस्ट बेनिफिटेड. देन वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉमेंसलिज्म. एज आई हैव टोल्ड यू, वन स्पीसीज कैन बेनिफिटेड
other one neither benefited nor harmed. So we can say one benefited, other unaffected. So as I have told you about the cattle, aggregate and the grazing cattle, barnacles growing on the back of the wheels, right? And I have given the orchid examples and the sea anemone, clownfishes. All these examples are belong to this commensalism. These are the positive effects in which generally benefits are occur. But if we talk about the negative effect in that conditions, you can just see especially here parasitism. In this parasitism, one organism can get benefited and another one is get harm. Especially we can say the parasite get benefited and host will get harm. As you have seen the कसकुटा अमरवेल, आपने पेड़ों के ऊपर एक पीले पीले रंग की ग्रीनिश कलर की एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी, और जब उस पेड़ के ऊपर ग्रो करती है कसकुटा तो कहते हैं कि ये पेड़ बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाए अगर उसको ख़त्म ना किया जाए, तो इट कैन गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स ओवर देयर. तो इसलिए अब वी कैन से दैट इट इज अ प्रीडेटर बिकॉज एज यू कैन से स्पेशली parasitism in which the cuscuta can get all the nutrients from the plant on which it is growing, but the plant does not get any benefit from that cuscuta. So we can say it is a negative effect and parasitism. If we can talk about the predators generally they are large in size and the prey are the smaller in size, in which the predator can always consume their prey. So we can say all the carnivorous animals and insectivorous plants comes in this category. Then we have to talk about the competitions. There is a negative effects, means both can get effects, means we can say mutual inhibition due to the short supply of the resources. We can say, as I have given you example, Abingdon tortoise in Galapagos become extinct because whenever the goats are introduced on that land, apparently due to the great browsing efficiency of the goat के बहुत ज़्यादा कंजप्शन करने की वजह से वहाँ से जो आपके एबिंगडन टॉर्टॉइस से वो डिसअपियर हो गए. लेटर ऑन वी कैन से एमेंसलिज्म में भी सेम थिंग है कि वन स्पीसीज वी गेट बेनिफिट एंड अदर वी नॉट इफेक्टेड, राइट. So in these conditions, as I have given you example of the penicillium does not allow to grow the streptococcus bacterium, means the interactions between this penicillium and the streptococcus bacterium, means interaction between the fungi and the bacteria that can be seen in this category. So we can say this can be effects mostly for such conditions. So students, you all must read the lessons and prepare your notes, as I have also completed this lesson today now, and then you must prepare this lesson because in all board examinations the 2 or 3 marks question can be asked from the same chapter. You must learn them properly. It is a application based lesson, so you must learn them properly. Later on in future we will talk about the next chapter, that is ecosystem. That is it is also asked so many times continuously, right. Especially this question can be asked in continuously from this chapter, and that is always sometimes from this lesson the 5 marks question can also be asked, right. So you all have to try to read that the ecosystem, and tomorrow or day after tomorrow we will discuss about this chapter. So be safe, make social distance, don't move unnecessary, and prepare your notes. If you have any problem you can ask me, so I will solve your problems, and after one day I will start the new lesson. So please read the whole lesson and prepare your notes.